As we have been doing on a nightly basis, we normally start with the voice of the Shankaracharya. Tonight we are doing one arti, which is at the end. So we'll have the opening poem by Shankaracharya, and then we'll take it from there. Let's all concentrate as we begin with the voice of the Shankaracharya poem. विश्वोद्गते कारणईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय यत्पादतोऽयं भवरोगवैद्यो यत्पादपांशुर्विमलत्वसिद्ध्ये यन्नामदुष्कर्मनिवारणाय तं प्रमेयं पुरुषं भजामि मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं नमस्ते ज्ञानरूपाय ज्ञानदाय नमस्तुते नमस्ते सर्वरूपाय सर्वसिद्धिप्रदायिने Bole Vrindavan Sri Krishna Chandra Ki Jai. Devotees, this evening I want to begin by glorifying the Guru. Our focus this evening will be on Bhagavan Sri Krishna, as I mentioned more Kirtan Bhajan, reflecting upon some of his glories. But for the week so far we have not yet glorified the Guru, and this evening I would like to begin with our glorification of the Guru. It is said, Dhyana Moolam Guru Murti, Puja Moolam Guru Pada, Mantra Moolam Guru Vakyam, Moksha Moolam Guru Kripa. The basis of meditation lies with the form of the Guru. The basis of puja, the feet of the Guru. The basis of all sacred formulas, the word of the Guru Mantra. Salvation depends upon the grace of the Guru. There can be three types of gurus. There is what we call the Vidya Guru, there is a Diksha Guru, and there is a Kul Guru. The Diksha Guru is the one who has initiated us. The Kul Guru is a family priest. The Vidya Guru is the one who teaches us. It is said, we can have many Vidya Gurus. As the bees would go from flower to flower extracting pollen, so too the disciple can go from Guru to Guru, if you feel like that, to learn, to acquire knowledge. So Vidya Gurus we can have many. Diksha Guru, the one who has initiated us, Guru Gita tells us should be only one. One. We should not be initiated more than once. If for some reason the Guru is not here again anymore, or the Guru falls from grace for whatever reason, we may adopt a Guru, but we are not initiated in the normal way as when we were first initiated. So, in this context here, in this circumstance, we adopt a Guru who will guide us, but still we were given mantra by one particular Guru. That Guru is one, Diksha Guru. And the Kul Guru, the family priest, for obvious reasons, the scriptures say should be one. So there will be less conflict. When you have too many gurus coming to one home, different opinions shared, it is a fitting ground for confusion. So that we are told, one Kul Guru, one family priest, who understands our history, who knows about us, who can guide us in the right way, based upon our traditions. Now, Guru Gita also tells us that the Diksha Guru can be all three, if he has the capacity. The Diksha Guru, he can be the family priest, and he can be the teacher also, if he has the capacity. So, it's good to understand. When we glorify the Guru, I would like us to concentrate on the Diksha Guru, the one who has initiated us in the divine life.
that one who has opened the door of spirituality, allowing us to walk through with a positive attitude to take ourselves to higher levels of realization, if not total self-realization. So we concentrate on such a Guru, and we repeat our Guru mantras in our minds, those of us who know our mantras. If we don't have our mantras, we don't remember them, Sri Guru Ve Namah. Those who have not yet been initiated, if you have chosen a Guru in principle, then you may concentrate on that form. Otherwise, any form of divinity that pleases you best, be it Bhagavan Sri Krishna, be it Bhagavan Sri Ram, whichever form, Jagat Guru. And the purity of heart, right intent, love, we glorify that Guru as we seek his mercy and his grace. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guruve Namah. गुरु जी के चरणों में शीश को झुकाओ, जन्म जन्म से भाग्य फल को पाओ। गुरु जी के चरणों में शीश को झुकाओ, गुरु जी के चरणों में शीश को झुकाओ, जन्म जन्म से भाग्य फल को पाओ। गुरु जी के चरणों में शीश को झुकाओ। लागे मोह माया ना कबहु जगत के, दया सिंधु गुरु जी को चरणन ध्याओ, दया सिंधु गुरु जी को चरणन ध्याओ। गुरु जी के चरणों में शीश को झुकाओ। भटकता रहा हूँ मैं युग युग से स्वामी, मिली ज्ञान आँखें हरि दर्श पाओ, मिली ज्ञान आँखें हरि दर्श पाओ। गुरु जी के चरणों में शीश को झुकाओ। काम क्रोध मद लोभ शत्रु है भारी, गुरु ज्ञान खड्ग से मारा भगाओ। गुरु ज्ञान खड्ग से मारा भगाओ। गुरु जी के चरणों में शीश को झुकाओ।
जिस वेद कहता अजन मायन दी, उस देख कर मन की दुविधा मिटाओ, उस देख कर मन की दुविधा मिटाओ। गुरु जी के चरणों में शीश को झुकाओ, गुरु जी के चरणों में शीश को झुकाओ। बोली श्री गुरु महाराज की जय। And devotees, the journey continues. We seek the blessings of Gajanan Swami. And I will invite Pandit Dr. Umesh Prasad, who will lead us as we glorify Gajanan Swami. He will follow with the glorification of Devi and also Bhagwan Shankar. So we keep this journey going as we visualize Gajanan followed by Devi Ma, Bhagwan Shankar. जय 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 सुत महेश, जय 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 सुत महेश, जय 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 सुत महेश, जय 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 सुत महेश। गण गणेश प्यारे, गण गणेश प्यारे, गण गणेश प्यारे, तुम जय 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 सुत गणेश, जय 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 सुत गणेश। शोभत सिंदूर भाल, शोभत सिंदूर भाल, मुकुट मोहन दृग विशाल। शोभत सिंदूर भाल, मुकुट मोहन दृग विशाल। गल में रत्नों की माल, गल में रत्नों की माल। सुंदर भुजचारी, सुंदर भुजचारी, तुम जय 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 सुत महेश, जय जय जय। लंबोदर एक दंत, लंबोदर एक दंत, गावे सुर साध संत, गावे सुर साध संत। पावे नहीं वेद अंत, पावे नहीं वेद अंत। नर पुराण सारे, नर पुराण सारे, तुम जय 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 सुत महेश, जय 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 सुत महेश। रिद्धि सिद्धि आज्ञा के साथ, रिद्धि सिद्धि आज्ञा के साथ। सन्मुख करि बांध हाथ, सन्मुख करि बांध हाथ। मेवा मिष्ठान लाल, मेवा मिष्ठान लाल। मुख में दे तिहारी, मुख में दे तिहारी। जय 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 जय
सुत महेश, जय 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 सुत महेश। मोतीले प्रार्थनाम, मोतीले प्रार्थनाम, यम से नहीं परे काम, यम से नहीं परे काम। पावे वैकुंठ धाम, पावे वैकुंठ धाम। आप चरण तारे, आप चरण तारे तुम, जय 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 सुत महेश, जय 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 सुत महेश। गण गणेश प्यारे, गण गणेश प्यारे, गण गणेश प्यारे तुम, जय 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 सुत महेश, जय 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 सुत महेश, जय 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 सुत महेश। बोल श्री गजानन स्वामी की जय। Devotees, and we continue as I explained before. The journey continues with the worship of Devi Ma, symbolizing the quality of mumukshutva, that intense longing to become in oneness with our true nature, which is divinity. So we visualize Devi, whichever aspect of divinity pleases you, Devi Ma, visualize. Again, Pandit Dr. Umesh will lead us that we glorify Mata. जय दुर्गे जगदम्बे भवानी, सकल अमंगल हरनि दयानी, सकल अमंगल हरनि दयानी। जय दुर्गे जगदम्बे भवानी, जय दुर्गे जगदम्बे भवानी, जय दुर्गे जगदम्बे भवानी, जय दुर्गे जगदम्बे। सकल अमंगल हरनि दयानी, सकल अमंगल हरनि दयानी। जय दुर्गे जगदम्बे भवानी, जय दुर्गे जगदम्बे। पगरनि सा जय दुर्गे जगदम्बे। शुंभ निशुंभ विदारिणी भगवती, शुंभ निशुंभ विदारिणी भगवती। शुंभ निशुंभ विदारिणी भगवती, देहु अमर पर माँ कल्याणी, देहु अमर पर माँ कल्याणी। जय दुर्गे जगदम्बे
भवानी जय दुर्गे जगदम्बे भवानी जय दुर्गे जय दुर्गे जगदम्बे भवानी जगदम्बे जय दुर्गे जगदम्बे भवानी जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जगदम्बे भवानी। बोल श्री आदिशक्ति जगदम्बा माता की जय। To conclude our invocation devotees, we must offer obeisance to Bhagwan Shankar, Deen Dayalu Kripa Sagar Bhakta Vatsal, Jatadhari. Visualize Jatadhari Gangadhar, Triyambak Chandramauli Neelakant, Nagavadana Trishurdhari Vrishabhahan, Bhagwan Shankar, Deen Dayalu Kripa Sagar Bhakta Vatsal. Om Namah Shivaya. Bhagwan symbolizes the quality of Tyaga, Vairagya. Visualize Bholinath so we can let go of all the negativities of life and focus on the higher objective. Om Namah Shivaya. शंकर भंडार भोले शंकर भंडार भोले शंकर भंडार भोले शंकर भंडार भोले। शंकर भंडार भोले शंकर भंडार भोले मस्तक पर चंद्र शोभे मस्तक पर चंद्र शोभे मस्तक पर चंद्र शोभे। आंगन में भस्म राख आंगन में भस्म राख नंदीगन संग दोले शंकर भंडार भोले शंकर शंकर भंडार भोले शंकर भंडार भोले शंकर। मुंदन की माला साज 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 शीश गंगनाद बाज शीश गंगनाद बाज। मुंदन की माला साज शीश गंगनाद बाज। दीन नेत्र पांच वस्त्र दीन नेत्र पांच वस्त्र काशी राम जय जय बोले शंकर भंडार भोले शंकर भंडार भोले शंकर। मुंदन की माला साज मुंदन की माला साज मुंदन की माला साज मुंदन की
माला साज शीश गंगनाद बाज दीन नेत्र पंच वस्त्र दीन नेत्र पंच वस्त्र काशी राम जय जय बोल शंकर भंडार बोल शंकर भंडार बोल शंकर शंकर भंडार बोल। बोले श्री उमापति महादेव की जय। Devotees, yet the said life is nothing but an empty dream unless one realizes the Supreme. Man is basically fourfold in nature. Man is a physical being, social, mental and spiritual. And these four can be compared to the four corners of a square. If a square is twisted, all we need to do is to rectify one angle, and the other angles would automatically fall into place because of the properties of the square. Because of the inherent nature of man, it is said, similarly, if man is out of sync, out of equilibrium with himself, the angle that needs to be rectified is the spiritual angle. If we rectify the spiritual angle, all the other angles would automatically fall into place. And it is in this context we are told, life is nothing but an empty dream unless one realizes the Supreme. Physically, socially, mentally, we can be very much elevated. But if we are dead spiritually, the other angles come to naught. Life has no meaning. So, in this context, we are advised by the sages that man, you must relentlessly pursue that divine. Seek His mercy, His grace. Relentlessly, not sometimes, relentlessly. So devotees, as the journey continues, through a simple bhajan, we will invite that Lord to come into our lives. And remember, we have mentioned, when you invite a special guest, you want to give him the best. We invite the best guest of all, the Lord Himself, into our hearts. We try to eradicate all the impurities, all the deviance, all the negativities. We create a wonderful abode within the temple of the heart so that we can welcome that Lord and give Him a special place here. So as we begin, we invite Him to come, each person in your own way. एक बार फिर तो आओ, बन बन बिछड़ने वाले, लीला दिखाओ भगवन, लीला रचाने वाले, एक बार फिर तो आओ, बन बन बिछड़ने वाले, लीला दिखाओ भगवन, लीला रचाने वाले, एक बार फिर तो आओ। क्रोधादि काम हमको बन कर असुर सताते, क्रोधादि काम हमको बन कर असुर सताते, इनसे बचाओ भगवन, इनसे बचाओ भगवन, जन की बचाने वाले, एक बार फिर तो आओ। गिरिवर उठा के तुमने, ब्रज की बचाया तुमने,
गिरिवर उठा के तुमने, ब्रज की बचाया तुमने, अब फिर वही समय, अब फिर वही समय है। न कंवर कहानी वाली एक बार फिर तो आओ। बन बन चरा के जिनके गोपाल तुम कहाए, बन बन चरा के जिनके गोपाल तुम कहाए, कौवे तुम्हें बुलाते, कौवे तुम्हें बुलाते, आओ चराने वाले एक बार फिर तो आओ। कंसादिकों को बधकर भूभार था मिटाया, कंसादिकों को बधकर भूभार था मिटाया, अब पाप भर है भी, अब पाप भर है भी, भूभार हरने वाले एक बार फिर तो आओ। भक्ति की तेरा सुन के आवो किशोर भगवन, भक्ति की तेरा सुन के आवो किशोर भगवन, दुनिया के सुख से भर दो, दुनिया के सुख से भर दो, श्री कृष्ण नाम वाले दुनिया के सुख से भर दो, श्री राम नाम वाले एक बार फिर तो आओ। बन बन बिछड़ने वाली लीला दिखाओ भगवन, लीला रचाने वाले एक बार फिर तो आओ, एक बार फिर तो आओ, एक बार फिर तो आओ। The Lord devotees manifested himself to remove the burdens of the earth. He took the delusive form of man, carrying with him two different types of lakshan, attitudes. Tatas lakshan, swarup lakshan. As a man, divine in human form, he behaved as a human being. And as divine in human form, he behaved as divine. Swarup lakshan. Devotees, the Lord manifested himself for our sakes. Whenever dharma is on the decline, adharma is on the rise,